Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss some important MCQ of chapter 2. So let's start the video. So our first question is, if alpha and beta are the zeros of polynomial px equal to 4x square plus 3x plus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to. So in our question, px is given how much? 4x square plus 3x plus 7. If you find the sum of zeros alpha plus beta, formula is minus b by a. If you put the value of minus b, you will get minus 3. A means 4. Similarly, finds product of just alpha into beta, c by a. So c means 7, a means 4. Now we need to find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So we need to find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Now if you take the LCM of alpha beta, you will get alpha into beta. So alpha, so 1 into beta, beta. Plus similarly, what will you get? 1 into alpha. So ultimately alpha plus beta value what you got? Alpha plus beta value you got minus 3 by 3, minus 3 by 4. Similarly alpha into beta you got 7 by 4. So let's put the value here. Alpha into beta you got minus 3 by 4. And similarly alpha into beta what you got? 7 by 4. Now you can cancel 4 by 4. So what will get? Ultimately minus 3 by 7. So our option number minus 3 by 7. Option number D is correct for question number 1. Okay. Now see question number 2. The product of the zeros of the polynomial x square minus 49. So we need to find the product of the polynomial x square minus 49. X square minus 49. So the coefficient of x is 1. So if you observe here, a is 1 and c is minus 49. Here b value is missing. So we need to find the product of zeros. So product of zeros alpha into beta formula is what? C by a. So in this question c is how much? Minus 49. A means 1. So ultimately our answer is minus 49. It is option number C. Okay, let's see question number 3. So question number 3 हम लोग को क्या दिया है? The zeros of the quadric polynomial 4u square plus 8u is. So we need to find the zeros of the quadric polynomial 4u square plus 8u. Now from this equation, what we can take common? From 4 and 8 we can take 4 common. From u square and u we can take 1u common. If you take 4u common, what will you get here? U plus 4 to the 8. So if you do either or, what will you get? 4u equal to 0. So ultimately u क्या हो जाए इसका 0 होगा, because 4 it will go this side, it will divide. So 0 divide by 4 0. Similarly हम लोग यहाँ पर क्या मिला? either or में u plus 2. ये और में हम लोग को क्या मिला? u plus 2 equal to 0. Now plus 2 if you shift this side it will become minus 2. So one value you got 0, another value you got minus 2. So it is minus 2 comma 0. That is option number D. Option number D is the correct one. Okay. Now let's move to our next question. Question number 4. Question number 4 में देखते हैं क्या दिया है. So in question number 4, what they have given, if 2 is a 0 of the quadric expression kx square plus 3x plus k, then the value of k is. Achha, we need to find the value of k. So they have given the equation k x square plus 3x plus k. This is our required equation. So if 2 is 0, so they have already mentioned that 2 is a 0. So in place of x, what will put 2? So this equation को हम लोग equal to 0 कर देंगे. So in place of x will put what? 2. So if you put 2 in place of x equal to 2, then it will become 2 square plus 3 into x means 2 plus k equal to 0. So ultimately क्या मिलेगा हम लोग को? k into 2 square means 4. So 4 into k, you will get 4k plus 3 to just 6 plus k equal to 0. So 4k plus k will become 5k plus 6. If you bring this side, it will become minus 6. So we need to find the value of k. So 5 यहाँ पर इंटू हो रहा था, इधर आंसर क्या हो जाएगा? Divide. So answer is how much? Minus 6 by 5. That is our option number C is correct for question number 4. Okay. Now similarly we'll move to question number 5. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखिए.
Question number 5 is what is given. If alpha, beta, and gamma are the zeros of the cubic polynomial x cube plus bx square plus cx plus d, then the value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. अच्छा, ये हम लोग को फॉर्मूला पूछा है क्यूबिक पोलिनोमियल का. सो हम लोग को फॉर्मूला था ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, क्या था इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था आपका c बाई ए. c बाई ए. सिमिलरली इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देता तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता? माइनस बी बाई ए और नॉट. सिमिलरली अल्फा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते क्या होता? माइनस डी बाई ए. So in this question they have asked this. So our answer is what? C by A. That is option number D. Option number D is the correct one. Okay, let's move to next question then. So let's move to question number 6 now. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial x cube minus px square plus qx minus r, then 1 by alpha beta plus 1 by beta gamma plus 1 by gamma alpha. अच्छा, हम लोग को इक्वेशन क्या दिया है इस बार? इक्वेशन दे हैव गिवन x cube minus px square plus qx minus r. Okay, so from this what we can do? We can take the sum of zeros alpha plus beta plus gamma. Since the power is cube, so you have to use the 3 zeros. इसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का? माइनस बी बाई ए. सो यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्या हो रहा है? माइनस बी हो रहा है तुम्हारा माइनस पी. सो माइनस माइनस कैंसिल तो क्या हो जाएगा? पी. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ए मीन्स हाउ मच? 1. तो अल्टीमेटली इट्स पी. सिमिलरली मीट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढ लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या था? माइनस डी बाई ए. यहाँ पर माइनस डी क्या हो रहा है? माइनस आर. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर. ए मीन्स 1. सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग व्हाट? आर. सम ऑफ जीरोस यू आर गेटिंग पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गेटिंग आर. अब हम लोग को ढूंढना क्या है? देखिए हम लोग को क्या बोला है? we need to find this value 1 by alpha beta plus 1 by beta gamma plus 1 by gamma alpha. So let's solve this. इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा? 1 by alpha beta plus 1 by beta gamma plus 1 by gamma alpha. If you solve this, what will you get? If you take the LCM, LCM से कितना आएगा? अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा बीटा तो कैंसिल हो क्या आएगा? गामा प्लस बीटा गामा चला गया तो क्या रहेगा? अल्फा प्लस अल्फा गामा चला गया क्या आएगा यहाँ पर? बीटा. If you arrange this, what will you get? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई अल्फा बीटा गामा. ना इफ यू सी हम लोग का इसका वैल्यू कितना मिला था? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी मिला था एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आर मिला था ना. जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर. सो इसका वैल्यू क्या मिला था? पी. और इसका वैल्यू क्या था हम लोग का? आर. सो आंसर इज पी बाई आर. सो पी बाई आर कौन सा ऑप्शन में है हम लोग का? पी बाई आर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. Okay, let's move to question number 7. The quadric polynomial whose zeros are 4 and 1 is. So the quadric polynomial whose zeros are 4 and 1. So हम लोग को दो zeros है 4 and 1. तो obviously we can find. We can use the formula alpha plus beta equal to minus b by a. So alpha plus beta will take 4 as alpha and beta as 1. So minus b by a. तो 4 plus 1 कितना होगा? 5 equal to minus b by a. Finally if you take alpha into beta, इसका फॉर्मूला क्या था? c by a. तो अल्फा हम लोग लेंगे 4, बीटा 1, देन c by a. तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 1 जो 4, 4 इक्वल टू c by a. तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, इसके नीचे भी 1 कर दीजिए. तो इफ यू कंपेयर द वैल्यू, a कितना हो रहा है? a1, सिमिलरली a1, b minus 5, c 4. So in this way let's solve. ओके, हम लोग को a का वैल्यू कितना मिला? a का वैल्यू 1 मिला. b हाउ मच यू गॉट? और c, b का वैल्यू कितना था हम लोग का?
B you got -5 and C you got 4. B -5 and C 4 और C हम लोग को मिला 4. Now we know the standard form of quadratic equation. Quadratic equation का standard form क्या था हम लोग का? ax² plus bx plus c. This is our standard form of quadratic equation. Now put the value. A means what? 1. So 1 into x² plus b means कितना मिला? -5 x plus c means 4. So ultimately 1 into x² क्या होगा? x² रहेगा plus minus minus 5 into x 5x plus 4. So our equation is what? x² minus 5x plus 4. So x² minus 5x plus 4. That is option number C. So हम लोग का option number C correct हो गया. Okay. Now let's move to next question. तो question number 8 में क्या दिया देखिए. If the degree of the polynomial is 3, then the number of zeros will be. So अगर polynomial का डिग्री या पावर 3 हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होगा. उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होता है. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर -3 लिखा है, ये माइनस को काट दीजिए. इट विल बिकम 3. ओके, नॉट -3, it is 3. Depending on the power of the polynomial, we can say how many zeros it will have. Okay, let's move to question number 9. If you see question number 9, हम लोग क्या दिया है? Sum of the zeros of the cubic polynomial. Sum of zeros. तो sum of zeros of cubic polynomial का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था? -b/a. है कि नहीं? तो यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग का यहाँ पर b कितना हो रहा है? -5. b हो रहा है -5. a how much you are getting? 3. So minus minus plus, so 5/3. It is option number D. ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो रहा है यहाँ पर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. If one of the zeros of the polynomial 6x² plus 12x plus k is the reciprocal of the other, then the value of k is. अच्छा, हम लोग क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया? If one of the zero of the polynomial is the reciprocal of the other. ओके, सपोज 1 0 you are taking अल्फा, तो उसका इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट जीरो अल्फा, देन उसका दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मीन्स ऑपोजिट. 1/बीटा उल्टा हो जाएगा. So we can take alpha. First zero will take alpha. Second zero will take as 1/beta because the first zero is the reciprocal of the second one. हम लोग क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर? पोलिनोमियल क्या दिया है? 6x² plus 12x plus k. We just need to find the value of k. So हम लोग का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? c/a और नॉट. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? c/a, है कि नहीं? So now see, alpha, in place of alpha we can write 1/beta or not. In place of alpha we can write 1/beta. बीटा को बीटा ही रख देंगे हम लोग. अब देखो c हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में c k दिया है एंड a how much is given? 6 or not. If you do you will get 6. So अब इसको सॉल्व करने से ऐसा मिला था हम लोग को 1/beta इंटू बीटा इक्वल टू k/6. वी गेटिंग दिस. देखो बीटा बीटा कैंसिल रह जाएगा क्या? 1 इक्वल टू k/6. therefore k इक्वल टू 6 मान से कितना होता है? 6. So k value is how much? 6. So that is option number 10. Sorry, option number B, not 10, 6. Let's move to our next question. Question number 11. The graph of x² plus 10 is option number A, intersect x-axis at two distinct points. B, touches x-axis at a point. C, neither touches nor intersect x-axis. D, either touches or intersect x-axis. So हम लोग इक्वेशन क्या दिया है? x² plus 10 equal to 0. इसे करने से क्या मिलेगा? x² plus 10 you have to inside will become -10 or not. Now if you remove the power square को if you shift square this side will become what? Plus minus root over -10 or not. Now whenever any value are getting under root over, तो वो क्या वैल्यू होता है? इमेजिनरी वैल्यू. So can we plot the graph of -√10 in the graph? Is it possible? So हम उसका ग्राफ बनाए, हम लोग ग्राफ में ये इसका वैल्यू हम लोग उतार ही नहीं पाएंगे. We will not able to form this graph. So आंसर क्या हो जाएगा? Neither touches nor intersect x-axis. That is option number C. We cannot form any graph using this value.
Okay, let's move to question number 11. The polynomial of 6x square minus 6x plus 8 can be written as, अच्छा, x square minus 6x plus 8. Factorize this. अब इसका हम लोग फैक्टराइज करने से क्या मिलेगा? 8 बीच में है -6. So if you factorize this, what will get? We can write like this: x square minus 4x minus 2x plus 8, or not? 4 to the 8, minus minus plus, generally -4 minus 2 -6. Now what we can take common from here? We can take x common, so x minus 4. From this we can take -2 common, so x minus 4. So ultimately what are you getting? x minus 2, x minus 4. तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए. We are getting from option number A. Okay. Okay. Let's move to our last question. That is question number 12. So question number 12 हम लोग को क्या दिया है? If px is a polynomial degree 1 and p equal to 0, then a is said to be. एक polynomial है px. They have given a polynomial px. Something is given here of degree 1. So बोला क्या हम लोग कंडीशन के लिए if pa equal to 0. अगर p x के साथ सपोज यहाँ पे कुछ इक्वेशन, सपोज वी आर राइटिंग x स्क्वायर प्लस समथिंग, सपोज वी आर राइटिंग what is it? We are writing -a. Okay. Now after putting a equal to 0, हम लोग को क्या मिलना चाहिए? आंसर 0 हो रहा है. After putting in place of x, if you are putting a equal to 0, then our answer is 0. So from this what we can say? That a is the 0, a is the factor or not? a is the 0 of px. a अगर हम लोग को इक्वेशन में डालने से 0 हो रहा है तो a क्या होगा? 0 of px or not? That is option number a. अगर हम लोग को a x में डालने से 0 हो रहा है आंसर, तो a px का 0 हो जाएगा. That is option number a, 0 of px. Okay, thank you.